रसियन लड़कियां लड़कों के ऊपर शासन करती हैं, मीन्स रसियन गर्ल्स रूल ऑन रसियन बॉयज। तो आज मैं आ गया हूँ गोवा के रसियन विलेज में और यहाँ से जानने की कोशिश करूँगा कि रसियन लोग कितना पे करते हैं और बहुत सारे सीक्रेट रसियन लोगों से ही पूछूंगा। तो रसियन विलेज गोवा में आपका स्वागत है। जस्ट आपको अभी मैं मरद से पूछता हूँ कि रूम रेंट कितना पे करता है। हाउ मच रूम रेंट यू आर गिविंग? I pay 15,000, but I make agreement with my owner that from next month it will be 12,000. Oh my God, that's good because you are the old customer of your owner. Yeah, something like this. It's concession for you. I can speak with him. Yeah, okay. तो रशियन पीपल को 15,000 में रूम रेंट मिलता है. That is too much. Okay. But I have a good, I really have good accommodation. Yeah, that is the good things. But you are paying 15,000. People are earning 20,000. Yes, that's true. That's true, no? So that means you are good. What your parents do? Oh, my father is a doctor and my mom's working in a shop. In shop. That means in Russia everybody works. In India, girls live at home and only boys work. That is the main difference. Am I right or wrong? In India, only boys work, girls living at home and sleeping like this. Yeah, they don't work. In Russia, everybody works. Mostly yes. Mostly. I heard, I saw a YouTuber and he was saying Russian girls are very influential. Very Which influential. Influential, that means they rule in boys. Is it right? It exists, yes. That's sometimes true. So is it right? Yeah. 90% right? I would say 70%? I would say 70 for sure. 70%. Yeah. But in India, only 3%, approximate 3 to 5% girls rule in boys. 95% boys rule in girls. Okay. That is the main reason. Here is, I think, more traditional society, because traditional means when the boys over the girls. Yeah, it's a traditional. Boys over the girl. Yeah. But in Russia, it's not, no? But it also was in Russia the same, maybe even 50 years ago. Even It 50. came with the global trends, girls over boys, because it's changing. All the history, boys was over the girls, and now it's changing. Now girls rule. So yeah. I wanna go there, but Here? yeah. Ruslan, Pasa, Milan, Denis. This is the Marat, and people always ask to me. Yeah, it's me. People always ask to me, where is a Russian village in Goa? Where is Russian village in Goa? Where? Yeah, every people in YouTube say there is a Russian village in Goa where all Russians live. Is it true? Village? You mean I know in jungles only? No, it's not. Actually, there is a certain area where all Russian taking room on rent. Is it right? I don't know. Where you live? In Mandra. In Mandap. Maximum people's live maybe Kerim. Is it true? People live in Kerala. Live in Kerim side. Yeah. So that's the reason people of India say that is the Russian village. I don't know, bro. I think all this North Goa is also like Russian village. Too many Russian people are here, and it's very nice to be here because I feel at the same time like at home. I know many people here, and also I love Indian people because they are very friendly. They're very, cheerful, and they always have this hospitality. And by living here more than a year, I found a very good connection with local people. So for me, they're the same like Russian people at home. Okay. Then will you show me Russian village? Will you show me Russian village?
Well, I don't know, bro. It's all the North Goa is half like Russian village right now. ओके दैट मीन्स ओके यहाँ पे कोई रशियन विलेज नहीं है. यहाँ पे पीपल्स एक सर्टेन एरिया में रहते हैं, दैट इज नोन एज रशियन विलेज. फ्यू पीपल्स आल्सो से बट दैट इज नॉट रशियन विलेज. Yeah, I don't know about Russian actual what you say. This Russian village, I don't know. It's everywhere. При этом у меня был опыт, потому что я ходил в те районы, и один чувак пытался спиздить у меня велик, блядь, пока я ехал. Он такой, дай мне его, дай, прям вот так оставил, я, блядь, от него удирал. Вот, то есть это как бы, знаешь, вот 50 Ну, стереотипы тоже неспроста возникли. Да, то есть и то происходит, по сути. Для меня это просто нахуйственно, ты пойми, что здесь, что Питер, что Питер. And you must eat by hands? Один и тот же человек. Like normally? Yeah. Normally Indians eat by hands. Eat by hand. And you don't use spoon? Yeah. Don't use spoon. But in office I have, yeah. There I cannot use hands. But normally they eat. This is the spoon. This is the hands. They eat like this. Ну, там, где он работает, типа, там руками не ест. Он работает на корабле. А так ест руками. You like to eat food, but you by your hands? Yes. By hands. Vegetables and roti, naan. We always eat with hands. No Indians use spoon. No Indian. If you will, if I will eat rice, then I can use spoon. If I will eat curd and any other things, then. But during this, always using hands only. Everyone. Теперь афроамериканец. Белый против черных — это расизм тысячелетий. But I mean, sometimes you just need to go deep into the sauce with your hands. And it's not you know, sometimes good. Not everybody likes when everybody goes with hands. Yeah. It's again no Indians eat together because everybody using hands. Am I right? Separately. Maybe big hands will be dirty. Big hands will be dirty. It's again every Indians eat in separate place. But the dishes are on one table and everyone cooks for themselves. Yeah, for themselves. Который просто за годы вот эти устоялся, понимаешь, и это и является гомофобией. И помимо этого, фразы по типу «пусть они ебутся дома, но не мешают», это тоже является гомофобией. Вот и все. Это новым другому поведению. Я не говорю там о том, что это хуёво и так далее, что тебе нужно с этим бороться. Как относишься к шуткам про геев? Я обожаю. Danish and Milan is in tension. Понимал, я первый раз рассказал. I can ask him one more time. Okay. А потом, когда я рассказал, хотите покушать? Да, я был не против. Потом я рассказал своим друзьям, и, блядь, у нас просто был вечер, я не знаю, стендап. Просто кто лучше шутку, блядь, про геев. Слушай, а ты, Да, кстати, ребят, каминг-аут, вау, вы знаете, что... तो जैसा कि आपने मेरी कन्वर्सेशन को पूरी तरह से अच्छी तरह से सुना होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, गोवा के अरंबुल एरिया में. और अरंबुल एरिया में एक रेस्टोरेंट में हूँ जो कि एक फेमस रेस्टोरेंट है जिसे किनारा रेस्टोरेंट कहा जाता है. और यहाँ पे रशियन लोगों के साथ रशियन लोगों से सीक्रेट जानने की कोशिश किया. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि रशियन लड़कियाँ सच में रशियन लड़कों पर शासन करती हैं और घर का मालिक रशियन लड़की होती है रसिया में. तो
तो ये एक कड़वा सच है। और ये लोग 15,000 रूम रेंट पे करते हैं यहाँ पे, और हर जगह अलग अलग पर है, मतलब मिनिमम 15,000 पे करना ही है इनको। तो ये है गोवा का रंबोल एरिया, या फिर ये कहें नॉर्थ गोवा का रंबोल एरिया। और अगर आप जानना चाहते हैं रशियन प्लेसेज इन गोवा, रशियन सीक्रेट प्लेसेज इन गोवा, बेस्ट प्लेसेज इन गोवा, रशियन फेमस प्लेसेज इन गोवा, बेस्ट बीचेज इन गोवा, टूरिस्ट प्लेसेज इन गोवा, बेस्ट प्लेसेज इन गोवा, फेमस प्लेसेज इन नॉर्थ गोवा, फेमस विजिटिंग प्लेसेज इन नॉर्थ गोवा, तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, चेकआउट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।